हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डिड यू ऑब्जर्व दैट इस स्टॉक के अंदर पिछले 9 दिनों के अंदर 25% का इजाफा हुआ है, वो भी इतने वॉलेटाइल मार्केट में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्टॉक प्राइसेस में 25% का इजाफा हुआ है। अब सवाल ये है, क्या हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या आज भी स्टॉक को बाय किया जा सकता है? सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स, कुछ फंडामेंटल्स और कुछ टेक्निकल्स पर अपना नजर डालते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक में क्या चल रहा है। सो आप सभी को पता है कि बैन कैपिटल एशिया के साथ में जो स्ट्रेटेजिक डील हुई है Manappuram Finance Limited की, to sell 18% of the stake in the company. With this, there would be a shift in the existing promoters holding. There would be a shift in the process, in the manner in which the entire company was being controlled. And now what you think that ऐसी डील के कारण जहां कल ही के दिन में 7% का इजाफा स्टॉक में हुआ है, उससे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ बड़ा असर पड़ने वाला है? What's your thought on that? Do share in the comment box. Now, let's try to decode certain facts which many of you people really don't know about Manappuram Finance Limited. The very first is Manappuram Finance Limited being the first, that is the pioneer, first mover when it comes to gold loan in India as a mainstream financial product. With this advantage, Manappuram Finance Limited has a massive gold holding of over 70 tons of gold, making it India's largest private gold holder. Just think, just imagine the numbers. When we talk about the third crucial point, it's about diversification. कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को व्हीकल लोन, होम लोन, एसएमई फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट और माइक्रो फाइनेंस जैसी वेराइड फाइनेंशियल सर्विसेज में डाइवर्सिफाई करके रखा है। विद दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग 5 मिलियन कस्टमर्स हैं और कंपनी आज की तारीख में 44,000 करोड़ का एयूएम मैनेज करती है। एंड द लास्ट बट द important aspect is the speed with which the company process the loans. 5 minutes instant approval. So which make it as the fastest financial service provider in India. तो ये तो हुई कुछ फैक्ट्स की बात, कुछ तथ्यों की बात विद रिगार्ड टू मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड। अब चलते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर और टेक्निकल्स की ओर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कंपनी के टेक्निकल नंबर्स को पहले देखते हैं या टेक्निकल चार्ट मूवमेंट को देखते हैं तो क्या पाते हैं? लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस। पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस स्टॉक की प्राइसेस में कुछ इस तरह का इजाफा नजर आया। तो अगर हम दिसंबर की बात करें 2023 की, ऑलमोस्ट 149 का ओपन, 177 का हाई। नेक्स्ट क्वार्टर पे जाते हैं जो मार्च 2024 को क्लोज हुआ, पोस्ट द दिसंबर 2023। इस तरह से कंपनी के हायर हाइज और लोस लग रहे थे। जून 2024 में मार्केट काफी पॉजिटिव था और उसी का इम्पैक्ट हम कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में भी देख सकते हैं। लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर काफी डिसाइडिंग हो गए। जहां पर हम दिसंबर 2024 की क्वार्टर की बात करें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 138 रुपीज का लो लगाया और 196 रुपी का हाई लगाया। रीसेंट क्वार्टर जो कि अभी क्लोज नहीं हुआ है, 21 मार्च की तारीख के दिन हम देखें तो इस कंपनी के स्टॉक ने ओपनिंग दी 190 पे, हाई लगाया 247 का, लो लगाया 168 का और अल्टीमेटली 234 के नंबर पर क्लोज हुआ। विद दिस वी कैन सी दैट इस स्टॉक की प्राइस में ऑलमोस्ट 27% का इजाफा इस क्वार्टर में नजर आया। विद दिस लेट्स गेट इनटू द मंथली चार्ट स्ट्रक्चर। मंथली चार्ट स्ट्रक्चर पर क्या हुआ? मंथली लेवल पर हम देखें तो करंट मंथ की कैंडल को अगर ड्रॉप कर दें तो आप देखेंगे कि प्राइस कहां से चली है। प्राइस यहां से चली है इस स्टॉक की ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। करंट कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं जब भी हम डिमांड जोन भाग करते हैं। तो सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स इस स्टॉक के लिए
करीब इस लेवल पर बैठे हुए हैं 157 के फ्रेश लेवल पर। बट एक्सप्लोसिव मूव तो यहीं से आई है, राइट? ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक को देखें हम, तो इस स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पर क्या किया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक इज मूविंग। उसने आपके ऑल टाइम हाई दैट इज 230 के लेवल के अबव क्लोजिंग दी है कल की तारीख में। क्लोजिंग आपको मिली है 234 के लेवल पर। मतलब इसके प्रीवियस जितने भी सप्लाई जोन थे वो सब रिस्पेक्ट हो गए, वो सब ब्रेक हो गए, और कंपनी ने एक फ्रेश क्लोजिंग यहां पर दी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखें तो साइडवेज से अपवर्ड होने का ट्रेंड इशारा कर रहा है। जस्ट लुक इनटू दिस लाइन, द स्मॉल वन, द ग्रीन वन, राइट? तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 तो बता रहा है कि साइडवेज से हल्का सा अपसाइड प्राइस जा रही। बट विद दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड the next important picture, and that is with regard to the fundamentals of the company. Okay, so मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक P10 के आसपास से, बुक वैल्यू 148 और करंट प्राइस इज 234। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है 3.12, राइट? लेट्स लुक टू द रिस्पेक्टेड peers फॉर दिस स्टॉक। सो BSE स्मॉल कैप को जहां ये स्टॉक रिप्रेजेंट करता है, वहीं मीडियन पी इंडस्ट्री का अराउंड 20 है, मनप्पुरम का पी अराउंड 10 है। सरप्राइजिंगली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उसके पी से हायर साइड पर है। जहां इंडस्ट्री पी 9 है, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.65% है। सो एक डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी, एक डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज की तारीख में ये कंपनी का स्टॉक दे रहा है। When we talk about the profit and loss statement, revenue year on year basis पर पॉजिटिव है और effectively ग्रो करते हैं। When we talk about the operating profits, the financing profits of the company, since it is an NBFC, we'll definitely look into the financing profits, right? So this has been growing. And when we talk about the EPS, you can see the changes in the EPS over a period of time. With this, the profit and loss statement clearly shows that the financing profits are positive and are significantly growing. Let's talk about the equity side. The reserves are positive from 8,000 crores to 9,000 to 11,000 and to 12,000 till September 2024. The borrowings are being significant, and we can say that the company is paying a huge interest cost because the leverage risk is high here. With this, when we talk about the asset sides, fairly composited. When we talk about the cash flow statement, cash flow from business operations being negative, the reason being is loans and advances, the outflow happened because of that. And apart from that, the company has taken fresh funding, and that's why the proceeds from borrowing resulted into cash flow from financing activities being positive. No such great payment of dividends by the company, but yes, that's all with regard to the cash flow statement. Now, interesting number is with regard to the investors, जहां FIIs की होल्डिंग 30% से घटकर दिसंबर में 27% हो गई है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 23% से बढ़कर 29% हो गई है, और प्रमोटर की होल्डिंग वहीं लगभग 35% के आसपास है। With this, Manappuram Finance Limited gives us a complete story about high leverage because of the debt equity ratio, a decent amount of return on equity and return on capital employed with a PE which is less than the industry standard. But इसके साथ में हम अगर स्टॉक के मूवमेंट को देखें तो आज की तारीख में स्टॉक जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके नए हाईज बना चुका है, ऐसे सिचुएशन पर मंथली बेसिस, वीकली बेसिस को देखने के बाद भी हमें कोई नियरेस्ट डिमांड जोन नहीं मिलता है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पोजिशन एज ऑफ नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पज इन दिस स्टॉक बिकॉज द स्टॉक इज एट ऑल टाइम रिस्क, ऑल टाइम हाई लेवल्स। अब समझने वाली बात है, अगर कोई स्टॉक
बिना किसी सपोर्ट के एक ही महीने में अपने मंथली डिमांड जोन को ब्रीच, मंथली सप्लाई जोन को ब्रीच कर सकता है, तो वो स्टॉक उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल that in the volatile market we should go conservative as a mindful investor or trader. But with this, what do you think? Can we conclude here now? Yes, exactly. So what are my key findings? I could see a leadership transition because the founder and the CEO, VP Nandakumar, is transitioning to non-executive chairman. And I could see that there is a complete makeover of the management succession part here. With this, there are chances of stronger compliance and governance because जब management change होता है, strategic leadership change होती है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि कंपनी का कल और बेहतर हो सकता है with regard to compliance and governance. The third thing which I think is they could expand more effectively their gold loan and microfinance offerings. And with this, they are going to bring more competition in the NBFC sector itself. Better digital integration, again, possibilities are higher to make it more easier, more effective over a period of time. And lastly, I'll say that there are chances of better valuation in re-rating of Manappuram stock because of changes in the strategic management, because of more robust gold loan offerings and microfinance offerings, which our country is definitely looking forward for. But my personal stake on this stock is wait and watch because the stock has just crossed its all-time high. So in this volatile market, it's always good to be conservative about such companies. I hope you enjoyed the video. Do subscribe the channel Procapitalist and see you in the next video. Bye-bye.